हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ किस किस को ये पता है? ऑस्ट्रेलिया में छा गई गडकरी $15 बिलियन का फ्यूचरिस्टिक एरियल ट्रांसपोर्ट, 1,200 किलोमीटर रोपवे भी है। क्या है ये? देखो भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दोस्तों नितिन गडकरी जी ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। भारत के इतिहास का ये सबसे ऑस्ट्रेलिया ज्यादा नहीं। ऐतिहासिक दौरा इसलिए होने वाला है बिकॉज $15 बिलियन वर्थ के रोपवे प्रोजेक्ट हमारे देश में बनने वाले हैं। 250 प्रोजेक्ट्स है ये टोटल, जिसकी कुल लंबाई ही 1200 किलोमीटर की है। जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम एक साथ मिला दें तो मुंबई से लेके दिल्ली तक पूरा रोपवे डाला जा सकता है। एंड यही सब प्रोजेक्ट्स 10 साल 15 साल नहीं बल्कि 5 साल में ही पूरे हो जाएंगे। सो आइए देखते हैं गडकरी जी की ये ऐतिहासिक जर्नी और सुनते हैं गडकरी जी ने क्या बोला। The program plans to develop close to 260 projects, which already I have received. 260 projects at the cost of $15 billion. Of 1,200 plus kilometer over a period of 5 years, making it the largest ropeway development program in the world. And that is to be a great potential for all of you to take interest in the development of ropeway, cable car, funicular rail in India. Highlight of this program include one of the most challenging projects like ropeway projects in Hemkund Sahib Ji, that is Badrinath, Kedarnath and Gangotri, Yamunotri, which are the very important religious places in India. I invite you all to the Indian Ropeway Expo. We are the fastest growing economy in the world. Regarding infrastructure development in India, we are now second largest network of national highway in India. We have already 6 world record. We are making big tonnage, big access control express highways, and there is a huge potential and economic viability equally already there. The most important thing in our program that we are connecting the tourist spots which are very important. Now, as far as Indian situation is concerned, we want to increase more tourism domestically and internationally, and we have got the potential. Now road network already is going on. At the same time, we need to develop ropeway, cable car and funicular system. As nearly 30% of the land area in India consists of hilly and forest terrain, where development of conventional modes of transportation such as rail, road and air possesses a technical challenge. Also in many of these areas, availability of land for developing infrastructure is a serious concern. Therefore, last mile connectivity remains a key challenge in such areas. At the same time, we have big cities like Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore. Bangalore is supposed to be the world IT capital now. And we have a problem of traffic jams and at the same time pollution. We are the country who has the highest import of the fossil fuel. So now this is the problem and a big challenge which I want to put up with you, that how it can be possible for mass rapid transport on electricity where we can use in the big city. That is also a big economic potential is there. And we need that some good solution for the people like you. I always believe that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth in the future. The most important thing in India is, as far as automobile industry is concerned, in the world our number was 4. But just we passed Japan and now our number is number 3rd now. And in due course of 5 years, as a transport minister, I am in charge for that. I am confident that we want to make it number 1. And we are working on that. So there are a lot of good ancillary industries where it can be useful for manufacturing of different components which you need. To realize the potential and ensure that development reaches one and all, our Prime Minister and Finance Minister declared a big program. National Ropeway Development. In our language, Parvatwala means mountains. So was announced by the Government of India in Union Budget in 2022-23, and it will improve connectivity and convenience for commuters in hilly regions and decongest urban areas,
where the conventional mode of transport is saturated. The program plans to develop close to 260 projects, which already I have received. 260 projects Received you. at the cost of $15 billion. Wow. Of 1,200 plus kilometer over a period of 5 years, making it the largest ropeway development program in the world. And that is to be a great potential for all of you to take interest in the इसमें ये भी development of होंगे? ropeway, cable car, funicular rail in India. इसको बोलते हैं क्या फैन? Highlight of this program include one of the most challenging projects like ropeway projects in Hemkund Sahib Ji, that is Badrinath, Kedarnath and Gangotri, Yamunotri, Wow. which are the very important religious places in India. With a length of 13 kilometers, carrying 2,200 passengers per direction per hour. At the same time, the ropeway project at Kedarnath, situated at a height of 3,600 meter, with a length of 10 kilometer, carrying 3,600 passengers per direction per hour, making it potentially one of the longest ropeway in the world. ओए होए. And probably that ropeway company is present here when we had given the order to them. Oh. This project will also improve accessibility to religious sites, along with ropeway-led tourism development in hilly areas such as Jammu and Kashmir. Kashmir is supposed to be one of the best tourist देख spots लो. for the world tourists. जम्मू Where कश्मीर. we are making tunnels. We are making 32 tunnels in the Kashmir. And one of the tunnel named as Jhojila, which is supposed to be the highest, longest tunnel of 12 kilometer, which we are making near to Kargil mountain Oh, wow. in Kashmir. Yes. This project will also improve accessibility to religious sites along with ropeway-led tourism development in hilly areas such as Jammu and Kashmir and northeastern states. The program also includes connecting sites of the world's most dynamic and historical center in Varanasi, with a flagship projects on decongesting urban areas in Varanasi with a ropeway of length of 4 kilometers. It can carry 3,000 passengers per direction per day to the city center, reducing travel time from 60 minutes to just 15 minutes. Cost Yeah, of the that- project is around $110 million. We have set up a special purpose vehicle named as National Highway Logistic Management Limited for the implementation of this project. It is with my ministry, and these projects are planned to be implemented under public-private partnership (PPP) with innovative financing model such as hybrid annuity mode (HAM) or build operate transport on BOT mode. The total outlay of the program is $15 billion. In Indian rupees, it comes 1.25 lakh crores, Pop. providing an attractive opportunity to ropeway players इतना globally. पापा. अरब In last 1 year, along with establishing projects worth rupees $450 million, rupees 4,000 crores are tendered, and work has been initiated on project worth $2.7 billion, that is rupees 23,000 crores. This project will enable to all-round development of hilly regions, tourist and religious places, and decongest urban centers. It will also promote new industries in these areas and create employment opportunities. The capital investment in the tourism sector, it is to be expenditure of 49% of the capital cost is for employment potential. India is a big country having a huge population, so the employment creation is equally a most important agenda for the government. If we can work together and bring down the cost of ropeway without compromise on the safety and quality, I am very confident that ropeway will be a game changer in the transportation sector. Wow. Only the one negative point in our country is our paying cost is very less. And that is the point what's important, which I want to request you, that with your technology, if you can make your vendors in India and manufacture the thing, it will reduce the cost drastically. And you will get more contracts in more numbers, which is going to be win-win situation for both. So this is to be one of the important things which I will request you that you should think on this line. We plan on providing incentives to OEMs, developers and other stakeholders as a part of the program to make ropeway manufacturing and assembly in a win-win proposition for all. ये था To ना कहाँ support the गए ropeway थे? industry, we plan to create demand through rollout 250 plus projects. This is just initially we received 250 projects. If you can go ahead, we can receive 3 times, 4 times more project than this. Enhance standards of ropeway development in line with global standards. Develop certification and training of key personnel to play a catalyst role and develop the supply chain for ropeway industry and provide support for setting up manufacturing centers in India. We encourage you to be a part of this transformational journey.
I invite you all to the Indian Ropeway Expo. That is very important on aerial mobility, which is going to be held on 13th and 31st May 2023 at Delhi. I will request you all stakeholders, please, you are welcome for this event. The last my point, which again I will request you, regarding the urban development, the big population is a big problem. India has got the expertise that how to increase the population and how to increase the automobile number. That is to be an asset or the liability, but that is a problem with us. So my request to all of you that mass rapid transport on electricity, particularly in the city area, it can be really a good, useful solution for all of us. I am really happy that I got appointed to interact with you. Once again, I will request all of you, please come to India for our convention in the 13th, 31st May and participate and invest in India. Our government has already given the highest priority for this project, and your technical collaboration, cooperation and guidance is very important. Once again, I am giving my all best wishes to this convention. Thank you very much. Welcome to the opportunities. वाह, कमाल कर रहे हैं, कमाल है। देख लो अपने एरिया, अपने डिपार्टमेंट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इतना पैसा एलोकेट किया है इस चीज के लिए, और वो जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। नितिन गडकरी जी जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, ऑफर कर रहे हैं। हाँ, वही जहाँ पे ये यूज हो रही है, मेजर स्कीइंग होती है। हाँ, स्कीइंग होती है, उनका वो रोपवे सिस्टम है, सब है। हाँ, वो उन्हीं कंट्रीज में जाके उनको बता रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं। अब हमारे, आप आओ दिल्ली में जो होगा उसमें आप अपने देखो, बातचीत करो, और जिसका बेस्ट ऑफर होगा, जिससे हमें लगेगा कि बेस्ट डील हो रही है, हम उनको ये देंगे, और 5 साल में सब बन जाएगा। देखिए, उन्होंने बताया भी कहाँ कहाँ बहुत जरूरी है, बोला भी था पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, बता रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, पॉल्यूशन होती है। अगर आप आते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा। मोस्ट लाइकली जो भी बंदा वैसा कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएगा। उन्होंने टिप्स भी दिए थे कि क्योंकि सभी लोग बिड करने वाले हैं। हाँ। जो बंदा कहता है मैं इंडिया में बनाऊंगा, मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, सबसे सस्ती बनेगी, सबसे बढ़िया बनेगी, उसको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा है कि सस्ती काम होना चाहिए, ओवरऑल आप स्पेंड कम करो, पर होनी क्वालिटी पे नहीं कोई असर होना चाहिए। और देखिए, इसका एक्सपीरियंस हमें यूएस में मिलता है। जैसे कई सिटीज़ हैं वहाँ पे पूरा जो जितना भी ट्रॉली सिस्टम है फ्री है, फ्री टेल्यूराइड वगैरह आप उसमें जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, आप जाते हैं, अच्छा हम ऊपर हमें जाना है स्लोप्स में, तो कोई टिकट नहीं चाहिए। वो रोप पे 24 घंटे, तकरीबन 24 घंटे वो चलती रहती है, केबल कार। आप जाइए, बैठिए, कहीं पर भी जाइए, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, जहाँ भी जाना चाहिए फ्री है। नहीं तो कई जगह पे बहुत महंगी है, कई जगह पे पैसा देना, वहाँ फ्री है। उन्होंने पूरी सिटी में फ्री कर दी कि आप बात फ्री है जी, आप जाओ जहाँ मर्जी, घूमो फिरो, जो करो ऊपर नीचे, दैट्स वेरी गुड। यही एग्जैक्टली इंडिया में होने वाला है। इट्स गोना बी फ्री। आप जाते हैं कश्मीर में जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको केबल कार मिलेगी फ्री, क्योंकि उनको पता है जो बंदा फ्रीली जा रहा है वो वहां जाके अपना पैसा स्पेंड करेगा, चीजें खरीद। मुझे पता है क्या लग रहा है, और कुछ सालों में आप वेट करो, ये इवन यूएसए को बीट कर देंगे, क्योंकि यूएसए जाके, जहां तक मुझे लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव हो नहीं रहा है, और इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव करके आगे बढ़ रहा है। देखते ओनली पॉइंट इज कि पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। एक तो यूनिफॉर्म सिविल जो है वो लेके आना है, सिविल कोड ले आओ। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन करिए, कितने बच्चे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इसी साल हो जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, लॉ जो भी बोलते हैं, उसको इस साल कर देना चाहिए, और लेट नहीं करना चाहिए। पर दिस इज अमेजिंग एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। मोदी जी, बीजेपी का जो एफर्ट दिख रहा है कंट्री को आगे बढ़ाने का, अमेजिंग, देख के इतना अमेजिंग लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो चलो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में लिखना मजे आ रहे हैं कि नहीं, आजकल की आज की गवर्नमेंट को देख के दिल खुश होता है कि नहीं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।